ख्याल सबसे पहले आपके पास आया, फिर आप बच्चन साहब के साथ? How did this begin? I'll tell you how it happened. Reliance and we were together putting up a plan, एक presentation कि कैसे इसको promote किया जाए, how do we do the entire promotion of the film. So we made this 15-20 page PowerPoint and we met sir at his office and उनको दिखाया and I think he liked it, but he said that why don't we try something different with this film and let's not use the usual way of promoting a film. कुछ और कर सकते हैं क्या? And हमने अपने डिफेंड में बोला कि सर ऐसा करना चाहिए because through this we can actually reach audience, blah blah blah, all that. But I think somewhere down the line sir was not very convinced, and the first line which he said, and we were all zapped, he said, why don't we actually tell the audience to promote the film? And we were like, what are you talking about? Like how? And he said, let's give material out. Let's give, उनको poster बनाने बोलते, गाने का remix करने बोलते, all that. And that's how it started. And sir, I think. Mr. Bachchan, if you could elaborate. जैसा कि रिभू ने बताया, अभी ऐसे ही एक मुलाकात हुई और जितने भी मार्केटिंग और प्रमोशनल के जितने भी दिग्गज थे वो हमारे सामने आकर के बैठे और उन्हें बताया कि कितना ही 15-20 पन्ने का एक पावर पॉइंट तैयार किया था. ये हम सब लोग आम जब भी कोई फिल्म रिलीज़ पे होती है तो देखते हैं. जितने भी कलाकार होते हैं वो अलग अलग शहरों में जाते हैं, प्रमोट करते हैं, मीडिया से मिलते हैं, वहाँ पर अलग अलग टीवी शोज़ में जाते हैं और फिल्म को प्रमोट करते हैं. मुझे लगा कि हमारी ये जो फिल्म है इसमें उस रग के कलाकार नहीं हैं जो उन फिल्मों में होते हैं जो अलग अलग जगह जाते हैं. वो सब बड़े कलाकार हैं और उनको वहाँ जाना भी चाहिए क्योंकि उनको उनकी फिल्मों में बहुत ज़्यादा धनराशि लगाई जाती है और उसका कलेक्शन उनको करना होता है. मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हमारी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विद्या एंड टू नवाज़, मुझे लगा कि हमारी जो स्टैंडिंग है वो इतनी बड़ी नहीं है और खामखा इतना पैसा क्यों खर्च करना मार्केटिंग के ऊपर या प्रमोशन के ऊपर. हम कुछ अलग या छोटा कर सकें लेकिन उतना ही प्रभावित अगर हो सके तो क्यों ना इसका एक हम कोशिश करें. तो वहीं से ये कोशिश शुरू हुई और हमने कहा कि देखिए हम सब यहाँ अगर आपके सामने बैठे हैं तो आप लोगों की वजह से बैठे. जनता जो है वो जनार्दन होती है, वही हमें बनाती है, वही हमें बिगाड़ती है और वही हमें धिक्कारती भी है. तो मुझे लगा कि क्यों ना जनता से पूछा जाए कि यदि इस तरह का अगर पदार्थ है उनके पास तो इसे किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए. और जो परिणाम आया है वो अभी आपने सामने देखा है और कुछ लोगों को हम आज यहाँ सम्मानित भी करेंगे. तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि आप आज यहाँ आए हैं और जितने भी विजेता हैं उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ. धीरे धीरे आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा. यही इसके पीछे कहानी थी और पता नहीं ये कितना प्रभावित होगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ये पहल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के भी इसी तरह की पहल और भी जगह होंगी. थैंक यू बच्चन सर. मिस बालन, मिस विद्या बालन. विद्या, आपने भी डिजाइन किया था एक पोस्टर इस पूरे कैंपेन के लिए, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल, पर दे प्रॉमिस कि यहाँ नहीं दिखाएंगे. कहाँ गया वो पोस्टर? नहीं, मैं सच बताऊं, मैंने सर के साथ बहुत काम किया है पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे ऑटोग्राफ मांगने की जो मैं बचपन से चाहती थी. तो मैंने कहा मैं पोस्टर डिजाइन कर लेती हूँ, अगर किसी तरह जीत गई तो ऑटोग्राफ के साथ मुझे एक पोस्टर मिलेगा. दैट वाज द रीजनिंग बिहाइंड डिजाइनिंग द पोस्टर. But Shujoy and Ribhu have really promised me they're not going to show it here. So thankfully. We're going to try and unearth it somehow. We're going to try and find it. But you think इतने सारे जो अभी आपने पोस्टर्स देखे हमारे विनर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके मुकाबले में आपका पोस्टर किधर था विद्या? मेरा पोस्टर अलग है, मुकाबला अलग है. नहीं, तुलना कर ही नहीं सकते बिकॉज आई वॉज अमेज्ड बाय द काइंड ऑफ आइडियाज पीपल हैड. और जिस तरह के पोस्टर्स देखने को मिले रियलाइज हुआ कि लोग इतने क्रिएटिव हैं, अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए उन्हें तो वो क्या कुछ कर जाते हैं. सो थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर्स एंड फॉर ओपनिंग आवर माइंड्स. आई थिंक हम लोग भी एक तरीके से चीज़ें करने लगते हैं और फिर
when something like this happens, it just, it gets the creative juices flowing even for us. So it's been a fabulous idea, and I'm glad I got to be a part of it in some way. Yeah, also मैं इसका श्रेय दरअसल देना चाहूँगा हमारे सोशल मीडिया पे जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जी उनको दूंगा, क्योंकि जब भी हमारी शूटिंग होती थी तो शाम तक मैं जितनी भी पिक्चर्स होती थी वो अपने ब्लॉग में या ट्विटर पे या फेसबुक पे डाल देता था। और जब उनको पता चला कि ये फिल्म बन रही है और 10 जून को रिलीज़ होने वाली है तो अपने आप ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिए पोस्टर, और बहुत सारा काम ये लोग अपने आप करते हैं। तो जितने भी मेरे ब्लॉग्स हैं उन सब लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का प्रोत्साहन रहा है जिसने मेरी सोच को बदला है। और ये लोग बहुत अपनी तरफ से भी काम करते रहते हैं। पता नहीं कुछ लोग यहाँ पर हैं कि नहीं ब्लॉग से, या तो ये लोग सब जहाँ जहाँ भी स्थित हैं, आपने देखा अलग अलग देश से लोग हैं, वो सब मेरे ब्लॉग के EF उनको मैं कहता हूँ एक्सटेंडेड फैमिली, वो सब बनाते रहते हैं और भेजते रहते हैं। अपने आप प्रचार करते हैं, कोई भी हमारी फिल्म अगर आती है टी-शर्ट्स बनाते हैं, अलग अलग मॉल्स में जा कर के पोस्टर लगा देते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ जहाँ भारतीय वहाँ निवास करते हैं या दुकानें जहाँ होती हैं जहाँ पर भारतीय जाते हैं वहाँ जा कर के पोस्टर लगा देते हैं। तो उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। They're all sitting right here. A huge round of applause for all our participants. Global Touch is got 3.9 million people. It reached 3.9 million people. Not just from all over the country, from all over the world participants आए थे. Egypt, Malaysia, Algeria, Israel, Turkey, USA. The producer of the film, Mr. Shujoy, how does that make you feel कि आपकी मूवी दुनिया के कोने-कोने में not just पहुंची है, लोग participate कर रहे हैं 3 में? This is extremely encouraging, but can I just say one thing? You're very kindly calling me the producer of the film, but I'm not really the producer of the film. There are many other people out here, like Sameer, Suresh, Gulab Ji, Deepak. There's a lot of effort that has gone into producing this film. I'm just one of them. I'm just basking in the glory of the effort that they have put in. Yes, it's an incredible, and I think all thanks to Sir and Vidya and Sir's extended family who have incredibly contributed to this campaign, which is the brainchild of Sir. And I'm amazed. I saw all those posters outside, and even we didn't think of such creative art. I remember seeing one poster which just had a cassette in it. It's incredible. So yes, yeah, I think what Shoy is saying, I'll take it forward from there. The idea, what Sir had, जो उनका idea था, and not only I think it was innovative as a promotion plan. I think because the बाहर जो जितने posters लगे हैं या किसी ने poem भेजा है, किसी ने और भी कुछ भेजा है, you actually see the kind of talent we have in the country. Yeah. And अभी शिबाशीष जो रिलायंस से है, अभी बात हो रहा था मेरा, and he was saying that ये जो हम अभी कुछ posters देखे हैं, we should actually call them like most of them are here, and why not try to do a film with them? It was I think it's incredible and ये जो सर का जो idea है, I think not only promotion, and I think ये जो talent हमारे सामने आया है, I think that is phenomenal. And I think if Reliance the support and ऐसा कुछ छोटा film है या कुछ है, they can do it with them. I think it will be great. Yeah. The best thing is none of them have seen the film. But if you see the posters, they actually reflect the sentiment of the film, which is incredible, I think. It's to assess and bring out that just by seeing the trailer is, a big hand to you. Yeah, absolutely. Incredibly talented. We would also like to acknowledge the brilliant efforts of Talent House India in pulling the campaign through for us. Okay, thank you very much. A lot of people, like we were talking about, जैसा कि हमने AV में भी देखा, दुनिया भर से कई सारे लोगों ने हमको एंट्रीज भेजी और कई सारे लोगों ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया. और हमारे पास इस वक्त एक वीडियो है from one of our participants. A young lady who is from my blog. She is my extended family member. Her name is Konkana. She lives in Kolkata, and for some peculiar reason, I have been her inspiration to learn acting. And she's right now studying acting in Los Angeles. She has been extremely well received there. She's done extremely well in her studies. Now she's getting offers. She's got an agent who looks out for her. I really want to compliment her.
in her class, there were many other students who were from different parts of the world. And when they saw the trailer and when they don't understand the language, and I don't think that we had subtitled the trailer, but they were able to gauge, and then they sent an earlier video to me of what they thought about it. And it's amazing to get an impression from people who are professionally training to become actors and to see their point of view. Because I'm sure that they look at a product differently. And perhaps their impressions, and particularly from people who do not understand the language, was very impressive. So she is from there, and she just sent me this, and I sent it across to Reliance and asked them to use this as a wonderful example of the creativity. कितने होनहार लोग हैं ये, कहाँ से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और हम लोग कभी-कभी ऐसे बैठ के सोचते हैं कि हमने जो बनाया है, हमने जो किया है वही उत्तम है, लेकिन ऐसा है नहीं. हमारी जनता में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके आपने रूप अभी देखा. And this is somebody who was a part of your extended family online. Yeah, she still is. And she reached out to you online, and it led to this happening. I talk to all of them almost every day. That's amazing. You know, so people from the EF will understand what I'm trying to say. I'm pretty sure हमारी audience में भी इस वक्त कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे बच्चन साहब की बात हुई होगी online, most certainly. That gentleman that definitely is the most excited gentleman in the green shirt over there. He definitely agrees with what I have to say. All right, so I think without further ado, we should start calling up our winners for the Teen It Around contest. Are we ready, ladies and gentlemen? Are we ready to present the winners to everyone? All right. सबसे पहले, this one, he is a graphic designer. May I please invite our first winner for today, Mr. Akshay Singh. Kolkata, Aniket Mishra. Aniket Mitra. From Mumbai, a lifelong learner and lover of art, Miss Amitabh. Asmita. Today, she's from Jaipur. She's a graphic designer, very enthusiastic about design. Miss Gargi Goyal, ladies. Who's interested in cricket, movies and art, ladies and gentlemen, Imran Bhagwan.
flown in all the way from Guwahati. He has an exam to give tomorrow. And he's here joining us today is Gyandeep Dev Sharma. Due to delay in flight schedule, our next winner could not make it today. But to accept the poster on behalf of Kishore Ghosh, may I invite somebody to accept the poster on behalf of Kishore Ghosh? Our next winner is from Bhopal. He's a visual artist and a 3D animator. May I request Manish Soni to come up on stage, please. Our next winner again, apologies, he could not make it today, but can we invite somebody to, on behalf of Mr. Manoj Nath, who's an illustrator from Bangalore. So we'll... The next one, she's a graphic designer and a digital artist from Kolkata. She's completing a diploma in multimedia. The lady with the beautiful smile and the beautiful name, Mona Lisa Das. Designer and an entrepreneur, Mr. Praful Gawali. Praful, could you please walk up on stage? Thank you.
spoke about making a few dreams come true. So our next winner is our most special winner today. Can I please invite up on stage Mr. Narsingh Rao Bongrala? Mr. Narsingh Rao Bongrala. Mr. Narsingh Rao Bongrala, everyone. सर इनका ड्रीम था आपसे मुलाकात करना एक दिन इसलिए इन्होंने इसमें भाग लिया इस कॉन्टेस्ट में. He just told me he was born the year Zanjeer was released. And he's been a fan since then. Thank you so much. Thank you. Thank you. Any words, Bachchan sir, before we move on to our next portion of the event today? You know, it's just that it's amazing, as I said earlier, that we tend to consider ourselves to be the brains, the brilliance in everything that we do creatively. But we forget that there are millions of people out here who are not just equally creative, but much better than us. And we acknowledge them and we thank them. And this is, I just feel very happy that we were able to take this initiative and allow people to express themselves, because they are the ones that expect us to, you know, put up our work in front of them, and they come and appreciate it, they criticize it, we acknowledge their criticism and their praise, but I'm just very, very happy and so impressed by the work that they have put up, really. Thank you so much again. Thank you. Vidya, your reactions on all the posters that we've seen so far and everyone who's come up on stage to receive their awards today? Absolutely fabulous, to say the least. Like sir said, you know, it's unbelievable that such varied ideas have come from people. So there are no two posters that are similar. That's what amazes me the most. And congratulations to all those who participated and all those who won. Thank you. Good on her, good on Konkana. Now sir, एक और फैन है जिन्होंने सबमिशन के तौर पर एक कविता लिखी थी. जी, उनका नाम है विकास बंसल. जी. और वो भी मैं उन्हें बुलाऊंगी स्टेज पे, लेकिन उससे पहले कि हम विकास को स्टेज पे बुलाएं, बच्चन सर आपकी आवाज में अगर आप उस कविता के कुछ बोल पढ़ सके हमारे सारे. ये मुझे एक कविता भेजी गई मेरे ब्लॉग पे ही, और मुझे बहुत सुंदर लगी और मैंने सोचा कि ये मैं जितने भी मार्केटिंग टीम है उनके दूं. इसके रचयिता हैं विकास बंसल. इंसान की जरूरतें तीन, इंसान की जरूरतें तीन, रोटी कपड़ा और मकान. इंसान की फितरतें तीन, शांत अशांत और मुस्कान. इंसान की अवस्थाएं तीन, बचपन जवानी बुढ़ापा. इंसान के भगवान तीन, विष्णु ब्रह्मा और महेश. इंसान के लिए शक्ति तीन,
लक्ष्मी, काली और सरस्वती इंसान की अभिलाषाएं तीन, सुख, समृद्धि और शांति इंसान की चिंताएं तीन, भूत, वर्तमान और भविष्य इंसान की मांग तीन, जल, वायु और अग्नि तीन के आसपास जिंदगी घूम रही है। क्या हुआ था 8 साल पहले, तीन से पूछ रही है। क्या हुई थी गलती उससे, किसी को पता नहीं। उम्र दराज है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें क्षमता नहीं। वो जब मिलेंगे 1, 2 और 3 तो क्या गजब होगा सीन। देखने को सब है बेकरार, बस अब तो 10 जून का है इंतजार। शुभकामनाएं 3 के लिए, 1, 2, 3। इस कविता के लिखने वाले विकास बंसल जी कृपया करके स्टेज पर आ जाएं। विकास जी। कविता यहाँ पर आपको सुनाई गई। इसके अलावा वी हैड अनदर कॉन्टेस्ट जहाँ पर सबसे पूछा गया था कि कौन सा गाना है पहला जो 3 का आप रिलीज करवाना चाहते हैं सबसे पहले। ये भी डिसीजन जनता के हाथ में दिया गया था। और किस किरदार के बारे में आप सबसे पहले जानना चाहते हैं? 45,000 लोगों ने चुना हक, जो पहला गाना वो सुनना चाहते थे। 45,000 लोगों ने हक के हक में वोट दिया। And the first character they wanted to know more about was Mr. Bachchan's character in the movie. और जितने भी participants आए सर इस contest में उनका lucky draw किया गया और इसके भी विजेता हमारे पास आज यहाँ पर हैं। तो हक के हक में जो वोट्स गए थे उनकी विजेता पायल क्या स्टेज पे आ सकती है? पायल, could you please come up on stage?
special contribution to our campaign. Can we please invite Sanket to come up on stage? This is the most exciting one. Now we're going to talk about the games. जो games के बारे में तीन के related जो games के बारे में बात होने वाली है. तीन options दिए गए थे. Hidden object game, the infinite runner या scrolling platform. And clear winners were the hidden object and infinite runner games. आज हम launch करने वाले हैं the infinite runner. Hidden object game को जल्द ही launch किया जाएगा. Can I invite up on stage Mr. Amit Khanduja, CEO of Reliance Games, to unveil the game today? Mr. Amit Khanduja, is he here? Mr. Khanduja. Khanduja, could you please come up here for a photo op? Anish. Admirer from Surat, Mr. Sunil Shah, who has something very special to give you today. Sunil, please. Aye.
all the participants and everyone. Thank you so much for making this success, this campaign such a resounding success. And I'd like to invite on stage the two people who made this whole thing happen, Mr. Arun Mehra from Talent House and Ranjan Singh from Phantom. If you could come up on stage, the brains behind the entire campaign, Mr. Mehra and Mr. Ranjan Singh. Thank you, sir. Thank you for having me. इन्हीं दोनों की पूरी दिन रात की मेहनत है. Thanks very much. Worked out very well. Yeah. Now that was तीन it around, पूरा का पूरा कैंपेन जो 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ, उसके सारे सबमिशन, सारे विजेता, देश विदेश से जिन जिन लोगों ने भाग लिया, आज हम सबसे मिले, सबके योगदान के बारे में बात की, सराहना की. Thank you so much for being here today. We're going to wrap up today's proceedings. Any last words, Mr. Bachchan, if you want to say before we thank the media for coming here today? हमको जो बोलना था हमने कह दिया. आप में से अगर किसी को कुछ कहना हो तो स्वागत है आपका. ये बहुत यूनिक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी, तो आपको क्या लगता है आगे जाके फ्यूचर में लोग जो ट्रेडिशनल वे है प्रमोशन का उससे थोड़ा हटकर लीग से हटकर कुछ सोचेंगे और कुछ यूनिक आइडियाज लाएंगे प्रमोशन के लिए? जी, हमने इस वजह से नहीं किया कि हम जो है पहल करें और बाकी लोग सब इसको पीछे करें. बहुत सारी मजबूरियां थी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर फिजूल खर्चा हो, क्योंकि ये फिर फिल्म पे एक दबाव होता है, बर्डन बनता है, और अंत में जो लोग ने पैसा लगाया हुआ है इसमें उनको तकलीफ़ होती है. क्या ऐसा करें जिससे कि हमको इतना सब खर्चा ना करना पड़े और फिर भी फिल्म का प्रमोशन हो. अगर इसका परिणाम क्या होता है ये हमें फिल्म के रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये जो हमारा तरीका था ये सही था, गलत था, कुछ कमियां थी. लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अपने आप को उस वर्ग में डाल रहा हूँ, हालांकि मुझे विद्या को उसके साथ नहीं करना चाहिए या नवाज़ को, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम जिस वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस तरह का प्रमोशन सही है और इतना तक हमें करना चाहिए. हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग जितना बड़ा बड़ा प्रमोशन होता है वो कर सकें. जो लोग जाते हैं टीवी शोज़ के ऊपर उनकी मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं और लोग जब वो टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं तो अपने चहेते कलाकारों को उसमें देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक लगाव होता है. मुझे नहीं लगा था कि अगर हम किसी टीवी शो में जाएंगे तो हम 3 को लेकर के बात क्या करेंगे. हमारे पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि जो कुछ कहना है वो तो आप फिल्म देखने के बाद ही कहेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक छोटी सी पहल हमने की है इसको लोग इसकी सराहना करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे. सर एक सवाल और है कि आज बॉक्सिंग लेजेंड जो है मोहम्मद, जी बड़ा दुख हुआ. मुलाकात उनसे हो चुकी है 1979 में लॉस एंजलिस में. जी की यादें हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये 1979 में मैं उनके घर गया था बेवरली हिल्स लॉस एंजलिस में, और बहुत ही हंसमुख, बहुत ही साधारण, बहुत ही धरती पे चलने वाले इंसान. हालांकि उनकी जितनी उपलब्धियां हैं वो तो सब लोग जानते हैं. प्रकाश मेहरा जी उस समय एक फिल्म बनाना चाह रहे थे जिसमें वो चाहते थे कि वो काम करें मेरे साथ, और उसकी बातचीत करने गए थे. वो फिल्म तो नहीं बनी और ना ही उसकी आगे चर्चा हुई, लेकिन वो जो क्षण थे उनके साथ वो बहुत ही यादगार रहे और बड़ा दुख हुआ. मैं ऐसा मानता हूँ कि he was the greatest and he will always remain the greatest. क्या उनका जीवन था, किन समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ा, सबके साथ न केवल वो रिंग में लड़ते रहे बल्कि रिंग के बाहर भी वो लड़ते रहे और अंत में उनको सफलता प्राप्त हुई. बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने की अपने जीवन में जो कि एक तरह से बड़ी यूनिक थी. जब रेशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ तो उन्हें हमने अपना गोल्ड मेडल फेंक दिया पानी में, वहाँ जो नदी थी वहाँ पानी में फेंक दिया, उसके खिलाफ लड़े. वो बहुत सी ऐसी बातें कही उन्होंने अपनी किताब में, अगर आप उनको पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो न केवल वो एक स्पोर्ट्समैन थे बल्कि बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही अपने जीवन में जो कि आज भी उनका हम सुनते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं और आज भी लागू हैं.
बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है उनको ऐसे देखे। बहुत कम उम्र है उनकी, 74 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही प्रार्थना है। Promotions to play an important role in for a film. Just 5 days to go. Today's promotion, how much benefit will it bring to the film? I think it's very difficult to quantify the impact of any promotional activity, but obviously marketeers know what they're doing and it's been effective. But finally, I think it's a film that speaks for itself on that Friday. So we are hoping that this film speaks to you, you're gripped by it, it touches a chord, and people just go to the theatres in large numbers. But it's very difficult to really say this is why the film worked, or these things will ensure, this formula will ensure that the film works. That's very difficult to say. I just want to add to that, ma'am. I feel that the attention span of the audiences today is very limited, very short, very quick, very fast. Had we started this 3 months ago, I'm pretty certain that they would have said, oh gosh, not again, bore ho gaye isko dekhte dekhte, kuch aur naya karo. I just feel that perhaps because the attention span is so small, let's keep the period of attention also small. So therefore, 4 or 5 days or the last 10 days, we've been trying to concentrate on it. Because there's so much happening today in the entertainment field that it's very difficult to attract somebody and keep that attraction on for so many months. I continue reiterating this point. The bigger stars have the capacity to keep attention of the audience for 3 months, and therefore it is valid that they do the kind of promotion that they do. But for something like us and for this film, I just felt that maybe a shorter span would be better. Friday jitters. How much Friday jitters are you having at the moment? The film is done, the print is ready, so there is no point talking about it. But of course, yeah, there is anxiety and there is expectation. Let's see. The Friday will decide, like Vidya said. Let's see. Yeah. एक्चुअली अभी मैं रंजन जो आपने देखा फैंटम से है, उनसे ही बात कर रहा था. नवाज एक्चुअली कुछ एक फिल्म का शूट में ना उसका ही इज रियली टाइड अप, सम शेड्यूल हैज गॉन हेवायर. तो यस्टरडे आल्सो ही वाज प्रमोटिंग हिज ओन फिल्म, वहाँ पे भी वो ठीक से पहुँच नहीं पाया. आई थिंक 10-15 मिनट्स के लिए वो आया था. तो आई थिंक ही इज रियली apologetic about it that he is not being part of our active events. There is that family thing. Yeah, correct sir. Also his brother got married recently and उसने कहा कि यार 3 बार उसका शादी पुश कर दिया, इस बार पुश करूँगा तो होगा ही नहीं, तो मुझे जाना चाहिए. तो I think Yeah, and the unfortunate part is I didn't get to wear the uniform. So Ribhu will, I think, have to make a sequel or something. So I get to wear the uniform. I like the power that cops wield. I think I've used it in the right way in the film only because the script demanded that. No, I've been waiting to unleash this power onto people by playing a cop. I finally got it. I just didn't get to hold someone by the scruff of their neck and say, do char gaal. कुछ नहीं. बहुत सोच समझ करके बोलिएगा. हाँ, बिल्कुल. I enjoyed it. I hope that answers your question. Right. Do we have more questions? Do we have a mic going around? जी. क्या? पब्लिक रिवॉर्ड किसी भी दिन आपका रिवॉर्ड होगा तो वो जाकर के अवार्ड बनता है. जी हाँ बिल्कुल. कहानी 2 पे बाद में बात होगी, पर हाँ मैं मन से बंगाली हूँ.
मैं सबसे यही कहती हूँ, मुझे कोलकाता में रहना, शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बट इस फिल्म में 3 में बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली मैं सबसे कहती थी कि कोलकाता तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ से मैं वाकिफ़ हूँ, पर फिर 3 के वक्त रिभू हमें बहुत अलग अलग लोकेशंस में ले गए और मुझे ताज्जुब हुआ कि अच्छा ऐसी भी जगह हैं जहाँ मैं नहीं गई हूँ। तो आई थिंक यू विल गेट टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोलकाता। ट्रेलर देख के ही आपको वो अंदाज़ा लग गया होगा। और क्या कहूँ, आप मुझे अभी किसी वजह से कोलकाता भेज दे तो मैं जाने को तैयार हूँ। थैंक यू। मन भर के देखेगा कोलकाता। 10 जून को मूवी रिलीज होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। Thank you all. थैंक यू शुजॉय, थैंक यू विद्या, थैंक यू अमित सर, थैंक यू रिभू, थैंक यू सो मच। माय नेम इज सुचारिता। गुड आफ्टरनून।